Differentiate between intrinsic and extrinsic semiconductor। तो इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। So for the intrinsic semiconductor, we can say that these are the pure form of the semiconductor, purest form of the semiconductor, and the purest form means a very small amount of impurities there, near about 10 raised to the power 8 is to 1 ratio. So that particular minimal amount of impurity can be there, but we assume it to be negligible. So they are the pure semiconductors. Extrinsic semiconductors are the semiconductors which are produced from the intrinsic semiconductor by adding certain impurities in a controlled manner. So when certain impurities are added in a controlled manner to the intrinsic semiconductor, it converts into the extrinsic semiconductor. So we can see that the extrinsic semiconductors are the semiconductors having the impurities, and these impurities are known as dopants, and the process is known as the doping process. So this is the first point which we can use to compare intrinsic and extrinsic. The second point is the conductivity. The conductivity of the intrinsic semiconductors are less as compared. The conductivity is less as compared to the conductivity of the extrinsic semiconductor. So it means that they show large current at a certain temperature. Extrinsic shows the large current at the certain temperature as compared to the intrinsic type of semiconductor. Whether it is a room temperature or some higher temperature, they show large conductivity, extrinsic, and they show the low conductivity. We can also write it in the terms of resistance also, because we know that the resistance is related in a reciprocal manner to the conductivity. So high conductivity means less resistance, and low conductivity means large resistance. So we can write this point also. Now the third point is the basically the carrier concentration. There are basically two type of carriers in the semiconductors. The first carrier is known as the uh, electron, and second one is known as the hole. So for the intrinsic semiconductors, the hole concentration and electron concentration is equal, whereas for the extrinsic semiconductor, the electron and hole concentration are different. So we know that there are two type of extrinsic semiconductors. For p type, we can say that NH is greater than Ne. It means that hole concentration is greater than electron concentration, and here hole are known as the majority charge carriers and electrons are known as the minority charge carriers. For the N type of semiconductor, Ne is greater than NH. It means that the electron concentration is greater as compared to the hole concentration for the N type of semiconductors. So these are the few points which we can use to differentiate between intrinsic and extrinsic semiconductors. तो यहाँ पे हमसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है, तो इन्हें हम पॉइंट वाइज दे सकते हैं। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन प्योरेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में 100% प्योरिटी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम एक रूल लेके चलते हैं 10 raised to the power 8:1 रूल। इट मीन्स दैट इम्प्योरिटी जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 raised to the power 8:1 रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि हम यहाँ पे इंटेंशनली इम्प्योरिटीज मिलाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करने को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम सर्टेन इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, और उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग प्रोसेस में हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिविटी या हाई करंट शो करते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो करंट या लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी कह सकते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कैरियर कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। मेटल्स में मेनली एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन बराबर होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन अनइक्वल होती है।
अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। जबकि अगर हम बात एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। So these are the few differences which I discussed. So hope you understand the explanation.